हेलो, आवाज क्लियर है? हेलो। चलो दोस्तों, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हो? सीओए लेक्चर का लेक्चर नंबर 4 पर आ चुके हैं हम। इन दिस लेक्चर we are going to start the path of the ALU Datapath control unit. So these are the blocks of the CPU, my dear. तो कैसे हो, कैसा प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? डीपीपी में कुछ डाउट्स है? लास्ट क्लासेस में हमने मिशन इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट कर चुका है, इसके बाद एड्रेसिंग मोड्स भी कंप्लीट कर चुका है। एड्रेसिंग मोड्स पार्ट 1, एड्रेसिंग मोड्स पार्ट 2। सो एक बार रिवाइज करेंगे प्रीवियस क्लास का लेक्चर क्या है। प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया? प्रीवियस क्लास में हमने these are the topics covered in the last class. Topics revision, we can say topics revision. तो लास्ट क्लास में हमने टू टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स डिस्कस किया। वन इज अ नॉन कंप्यूटेबल एड्रेसिंग मोड, अदर वन इज अ कंप्यूटेबल एड्रेसिंग मोड. In non-computable addressing mode, we are not going to access the memory, but in computable addressing mode, we are going to access the we are going to calculate the memory related things. Okay, so last class में मैंने auto increment, auto decrement, indexed mode, PC relative mode and base register mode ये पूरा डिस्कस किया है। इसके पहले हमने implied addressing mode, immediate addressing mode, register addressing mode, register indirect addressing mode, direct addressing mode, indirect addressing mode डिस्कस किया। ओके माय डियर, या ये क्रैश कोर्स है सर, COA का क्रैश कोर्स है फॉर EC पीपल, एक्सक्लूसिवली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पीपल। जितने लोग अभी पहले बार आ रहे हैं, क्लास सेशन होने के बाद प्रीवियस लेक्चर्स भी देखो। एनीवे यू आर गोइंग टू गेट सम गुड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दिस क्लास आल्सो। ओके, तो आज का क्लास में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ CPU के बारे में। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट CPU। CPU में मेजरली टू पार्ट्स है, वन इज द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट and other one is the controlling unit. तो इसके बीच आर्किटेक्चर क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, these are the major parts. yes, CS का लिए this is not for CS dear, this is for ECE, this is for ECE. EC के लिए है, EC का गेट सिलेबस है ये पूरा। ओके, चलो जितने लोग क्लास को देख रहे हैं एक ध्यान रखो, इस EC का सिलेबस है। EC को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये पार्ट आएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन में ये पार्ट आएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में केवल 4 टॉपिक्स है, केवल मिशन इंस्ट्रक्शंस, एड्रेसिंग मोड्स एंड CPU के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ओके, चलो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ओके, so what is the concept behind all this working? So inside the CPU what is going to happen, that we'll discuss. So now in this particular lecture, first before starting the CPU, first of all I want to talk about the CPU clock. Okay, so CPU clock cycle क्या होता है? So, for example, actually if you take instruction, one instruction if you want to execute, one instruction cannot be executed the same at a time. Okay, so that particular instruction को हमने एक छोटा instructions के रूप में कट करके microprocessor is going to exemplify those particular instructions are going to be distinguished as a small units. Okay ना बेटा? So this particular one instruction is going to be cut into a group of some small slots. So these are group of some slots. So this particular one are we call as some micro units. हम क्या बोलते हैं उसको? One instruction is going to split into a group of micro units. So this is what we call as micro programming or a micro units. इसको microprocessor language में बोले तो हम इसको mission cycles बोलते हैं। Mission cycle is a group of T states. Okay, so how to understand this?
that is a frequency of the clock, my dear. Suppose the frequency of the clock, that is a number of cycles per second. Okay, so number of clock cycles per second. So this is what we call as frequency, my dear. Number of clock cycles per second is called frequency. Okay, ये frequency को कैसे define कर सकते हैं? Suppose if I am using the any processor, suppose if I am using the 5 megahertz is the frequency. For example, if I am taking 5 megahertz is the frequency. Okay, if 5 megahertz is a frequency, what is the time period? The time period is equal to 1 by frequency. So that is going to become 1 by 5 into 10 to the power of 6. That is going to become 0.2 microseconds होता है. कितना होता है? 0.2 microseconds. So ये है 1 T state, one smallest unit of the time. So that is called 1 T state. That means if you represent it is in the form of a T state. Suppose if it is an active high clock, so this is the T state, my dear. One T on, one T off. So like this, if you take this as from active high, suppose if I am taking from this state to this state, so this is what we call as 1 T state, my dear. So this is what we call as 1 T state, T1 state, and next this is what we call as second T2 state, and next this is what we call as T3 state, and this is what we call as T4 state. Usually microprocessor क्या करता है, CPU क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ डिफाइंड नंबर ऑफ टी स्टेट्स रहता है. अगर if the processor is not able to complete until the T3 state, what it will do, it will attach one wait state here. So it is going to attach one wait state here, and after the wait state one machine cycle is going to take place. Now one more T state is going to come into the picture. So try to understand, my dear. So now this is going to become one machine cycle. Actually we call it as T state. So dear aspirants, try to understand frequency of the clock of the CPU. Okay na? Or frequency utilized by the CPU. We can call it as frequency utilized by the CPU. There may be another clock frequency that is related to microprocessor subject. Okay. So frequency of the CPU, if you take it as 5 megahertz, my dear, frequency of the CPU is 5 megahertz. The T state of the CPU, will become 0.2 microseconds, my dear. 0.2 microseconds. So 1 T state is this. This is 1 T state, my dear. This is 1 T state. This is 1 T state. Okay na? So what is a one machine cycle? What is a machine cycle? A group of T states. A group of T states is called machine cycle. Okay. Suppose a group of n number of T states, n of T, so we call it as one machine cycle. Okay. इसको क्या बोलते हैं हम? एक machine cycle बोलते हैं. Machine cycle बोलते हैं. For example, if you take machine cycles example, memory read is a machine cycle. Agar you are taking the data from a memory, that is a machine cycle. Okay na? Suppose you are fetching an opcode. This opcode fetch is a machine cycle. Opcode fetch, it is a machine cycle. Memory write, it is also one more machine cycle. So IO read is one more machine cycle. IO write, it is also one more machine cycle. Like this,
4 machine cycles. For example, opcode fetch may take 4 T-states. Depends upon the processor. Some of the processor may take more or less also. Memory read can be taking 3 T-states. Memory write can be taking 3 T-states. IO read is taking suppose some 3 T-states. IO write is taking some 3 T-states, my dear. Okay. So, क्या a machine cycle पूरा एक instruction cycle बनता है? Please answer me. One machine cycle, can it become like a will it become like a instruction cycle? Instruction cycle क्या होता है? जल्दी बताइए. Please answer me. Instruction cycle क्या होता है? One instruction cycle can contain many number of machine cycles. One instruction cycle can contain n number of machine cycles. N number of machine cycles. Please make a note of this important point. See, this is the most important understanding you need. Frequency of the CPU. This is for example I have taken, my dear. This is for example. I have taken. For example, frequency utilized by the CPU is 5 MHz. Then the one T-state of the CPU will become 0.2 microseconds. One machine cycle will be a group of T-states. What are the machine cycles? These are the machine cycles: opcode fetch, memory read, memory write, IO read, IO write. So depending. Okay. See, for example, if I am taking the processor, for example, if you take a 8085 processor, if I am taking the 8085 microprocessor, clock frequency is equal to, frequency of the clock is equal to 1/2 of the crystal frequency. 1/2 of the crystal frequency, my dear. That means from this, if I am taking the crystal frequency as 6.14 megahertz, frequency of the crystal is 6.14 megahertz, then the frequency of the clock is 3.07 megahertz, my dear. So this is the frequency of the clock signal, 3.07 megahertz. अभी time period कितना होगा? Time period of the CPU, one clock state, one T state का कितना होगा? 1/3 megahertz. 1/3 megahertz means approximately 0.3 microseconds. 0.3 microseconds. Try to understand, my dear. One T state is equal to 0.3 microseconds. One T state is equal to 0.3 microseconds. For example, one instruction has, please calculate, one instruction is having 4 machine cycles. One instruction is having 4 machine cycles. Let us take that 4 machine cycle as opcode fetch machine cycle and memory read machine cycle, and next memory write machine cycle. Suppose it is having opcode fetch machine cycle and it is having operand read. Actually, this is not operand read machine cycle. Next, it is having the memory read machine cycle. Suppose it is having memory write machine cycle. Any instruction can have number of machine cycles like this. One instruction can involve, for example, if I am taking load accumulator with certain number, so उसमें पहले क्या है? load, this is opcode, उसको fetch करना है, load dash, that operand को read करना है, उसके बाद वो मेमोरी को जाना है, मेमोरी से रीड करना है, रीड करने के बाद फिर मेमोरी को राइट बैक करना है. समझ रहे हैं आपको? ईसी बच्चों में आपको सब्जेक्ट को माइक्रो प्रोसेसर के कॉन्सेप्ट में जाना है. opcode fetch, operand read, memory write. अभी for example, opcode fetch is taking how many machine cycles, my dear? So if you take the opcode fetch, suppose opcode fetch is taking 4 T states, operand read, suppose it is taking 3 T state, memory read is taking suppose 3 T state, memory write is taking suppose 3 T state. अभी पूरा कितना हो गया? 4 plus 3 7 plus 3 10 plus 3 13 T states बन गया. So 4 machine cycles involve 13 T states, my dear. 13 T states. So one instruction can take 13 T states.
One instruction is a combination of 4 mission cycles. 4 mission cycles means 13 T-states. For example, if I have taken like this, one opcode fetch mission cycle, one operand read mission cycle. All of you understanding, dear? जितने लोग सेशन को देख रहे हैं, मुझे सेशन को लाइक करो, सेशन को अटेंडेंस दीजिए एंड सेशन में रिस्पांस दीजिए बेटा, क्योंकि द सब्जेक्ट ऑफ COA विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, विद रिस्पेक्ट टू EC पीपल पढ़ाना इतना आसानी नहीं है, क्योंकि वी हैव टू चेंज द मोड ऑफ द सब्जेक्ट. We have to change the mode of the subject from the computer science to EC people. That's the point here. So 4T, 3T, 3T, 3T कितना हो गया? जितने लोग सेशन को देख रहे हैं मुझे रिस्पॉन्स दीजिए. पूरा कितना होगा? 13 T-states हो गया. 13 T-states बोलो तो कितना हो गया टाइम? 1 T-state 0.3 माइक्रोसेकंड्स हो गया. 1 T-state 0.3 माइक्रोसेकंड्स हो गया. 13 T-states बोलो कितना हो गया? 3.9 माइक्रोसेकंड्स. 13 into 3, 3 3 जा 39. So it is going to become 3.9 microseconds, my dear. 3.9 microseconds is going to happen for one instruction. See, from this again one more calculation also I can take. One instruction complete करने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है? Approximately 3.9 बोलो तो 4 microseconds, approximately 4 microseconds लग रहा है. That means for 1 second कितना instructions होगा? 1 by 4 into 10 to the power of minus 6 instructions होगा. So this is what we call as 1 by 4 means 0.25, 10 to the power of 6 means mega. So this is what we call mega instructions. So this is what we call as 0.25 into kilo means 10 power 3, mega means 10 power. What we call this as 0.25 MIPS. All of you understood, my dear? All of you understood this word? All of you understood this word? All of you understood this word, my dear? Please respond. So I have introduced a new word called MIPS, my dear. MIPS means million of instructions, million instructions per second. How many million instructions are going to be executed by a particular processor? So that I have explained here. All of you got this point? अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना है? हाउ मेनी नंबर ऑफ मशीन साइकिल्स होता है एंड वो मशीन साइकिल्स नंबर ऑफ टी स्टेट्स अगर अवेलेबल है, सो व्हाट इज द मिनिमम डाटा यू रिक्वायर टू कैलकुलेट व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेसर और CPU, हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड इज पॉसिबल. इसके लिए हमको क्या चाहिए? नंबर ऑफ टी स्टेट्स चाहिए. एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है प्रगति, एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है अनीशा, एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है MIPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड. इसके लिए फार्मूलास की याद रखना. कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स में जो लोग दे विल बी प्रैक्टिसिंग द फार्मूलास, नो नीड ऑफ फार्मूलास हियर. अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर साइंस का, बेसिक प्रोसेसर का अंडरस्टैंडिंग है तो आराम से स्टेप बाय स्टेप आप ऐसा कर सकते हैं. मजा आ गया? मजा आ गया बेटा? मुझे रिस्पॉन्स दीजिए बेटा. आई नीड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू. चलो, नाउ द सेम थिंग इफ आई एम गोइंग फॉर माय डियर सर, इफ आई एम गोइंग फॉर 1 second, आई विल लेट मी टेक वन मोर प्रोसेसर. So for example, if I am going for 8086, for example, if I am taking another processor for example, if I am taking the 8086 microprocessor, so frequency of 8086, frequency of this CPU, central processing unit, if I am using this particular CPU, is equal to 1 by 3 of frequency of the crystal. Okay, all of you know this point. 1 by 3 of frequency of the crystal. In ये फ्रीक्वेंसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अगर आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिए तो नो इश्यू, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दिए तो भी आपको माइंड में होना है. 1 by 3 of the frequency of the crystal. So frequency of the crystal suppose is 15 megahertz. If frequency of the crystal is 15 megahertz, so frequency of the CPU कितना होगा? frequency of the CPU कितना होगा? 5 megahertz होगा. अगर frequency of the CPU 5 megahertz होगा
दैट मीन्स टाइम स्टेट टी स्टेट कितना होगा 0.2 माइक्रोसेकंड होगा, 0.2 microsecond होगा. So 1 t state represents 0.2 microsecond, my dear, here. Okay, see for example now, for example if one instruction, for example here one instruction is same, suppose here also same, one instruction is taking 4 mission cycles. How much? One instruction is taking the 4 mission cycles, my dear. How many mission cycles? 4 mission cycles. For example, what are the 4 mission cycles? Let us take it is a opcode fetch mission cycle. Next one is the operand read mission cycle. Next one, let us take some IO read mission cycle. Next one, let us take IO write mission cycle. You understand? See, what are these mission cycles, my dear? A processor can take the data from the memory. It is one mission cycle. A processor can take the data from a particular memory location. ये memory read operation बोलते हैं. इसके लिए थोड़ा number of t states लगेगा. Similarly, processor can write the data to the memory. उसके लिए भी number of t states लगेगा. Processor can take the data from a IO device like keyboard. उसके भी some number of t states लगेगा. Processor can write the data to a monitor or data to a printer. उसके भी number of t states लगेगा. For example, if you take opcode को fetch करने में थोड़ा सा 4 t states हो गया. ऑपरेंड रीड के लिए सपोज 3 t स्टेट्स हो गया, आईओ रीड के लिए 3 t स्टेट्स हो गया, आईओ राइट के लिए 3 t स्टेट्स हो गया. अनटैप्ड कंटेंट मेरे दोस्तों, ये अनटैप्ड कंटेंट है, ऐसा अंडरस्टैंड करना है. सीपीयू का एक्सेस टाइम बोलो तो क्या है, सीपीयू का इंस्ट्रक्शन साइकिल टाइम बोलो तो क्या है, इससे आपको क्लैरिटी आएगा. तो पूरा मिला के कितना आएगा, 4 + 3 7 + 3 10 13 t स्टेट्स बन गया. सो 13 t स्टेट्स मीन्स हाउ मच. सो वन इंस्ट्रक्शन के लिए कितना टाइम हो रहा है, प्लीज कैलकुलेट. वन इंस्ट्रक्शन के लिए कितना टी स्टेट्स हो रहा है, 13 टी स्टेट्स बन रहा है. सो 1 टी स्टेट का टाइम कितना है, 0.2 माइक्रोसेकंड है. सो 13 इंटू 0.2 माइक्रोसेकंड, माय डियर, ये पूरा मिला के कितना होगा, 2/10 26/10. सो 2.6 माइक्रोसेकंड आ रहा है. कितना आ रहा है, 2.6 माइक्रोसेकंड आ रहा है. 2.6 microsecond आ रहा है. That means, so from this now what I can extract, my dear, same I can extract some important thing here. What is that important thing, please write. One instruction के लिए, one instruction execute करने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है, 2.6 microseconds लग रहा है. That means in 1 second how many number of instructions will be taking place now, 1/2.6 micro instructions. That means if you take this 1/2.6, कितना आ रहा है 1/2.6, जल्दी कैलकुलेट करके बताइए. तो 1 सेकंड में हाउ मनी नंबर ऑफ MIPS आ रहे हैं, अभी देखो कितना आ रहा है, 1/2.6 मीन्स कितना है, जल्दी बताइए. जितने लोग सेशन में लाइव में है जल्दी बताइए, 1/2.6 बोल तो कितना आ रहा है, 10/26. .38. So if you see now, this is getting as 0.38 into 10 power 6 instructions are executable in 1 second duration. That means the MIPS, if you take the millions of instructions per second, MIPS, the millions of instructions per second कितना है, 0.38 into 0.38. That's it, 0.38. So now tell me, which is faster device in these two? So if you see this one, the 8085 is able to have 0.25 MIPS, whereas 8086 is having 0.38 MIPS. So let me write. So if I write like this, frequency of 8085, let me take somewhere. So frequency of 8085 is how much, smaller than frequency of 8086. I mean to say, frequency of processor 1 PC
processor 1 is shorter than the frequency of the processor 2. That means the time taken for the processor one cycle के लिए, this is what we call as one clock cycle. क्या बोलते हैं उसको? One clock cycle. Okay, my dear, this is one clock cycle. The time taken here is more, my dear. Got it? Then the millions of instructions per second, MIPS for the processor 1 and MIPS for the processor 2, if you check, which is greater, my dear? This is greater. So please make a note of this particular table as a mantra. Number of problems are possible on this particular concept. Masha, excellent. Please session को like करके जाओ. You understand the concept of the CPU now? The CPU processor में T-states का importance कहाँ है? चलो. Now, let us take analysis of this particular question. See, I want to give some basic definitions. CPU cycle, my dear. So please note down what is a CPU cycle. That is what we call. This is what we call as T-state. T-state का definition है ये. So T-state का definition क्या है? Time in which CPU can perform one smallest micro operation. Okay ना? One smallest micro operation. So that is what we call as one T-state. इसको क्या बोलते हैं हम? One T-state, my dear. Okay? Clock rate. Clock rate को और एक बोलते हैं frequency. Frequency of CPU is nothing but rate of the clock. Frequency of the CPU is nothing but 1 by T, my dear. That's what I have written. Okay, so in words, these are the words. That's what I have just before I have discussed, but I am giving you the definition. These are some textbook definitions, my dear. All of you understanding these words? आपको समझ में आ रहा आपको? One clock rate is equal to 1 by clock cycle. Next, CPI बोलो तो cycles per instruction. Number of CPU cycles required to execute one instruction. To execute one instruction. Sorry, this is instruction. To execute some instruction. Okay, this is one instruction, my dear. This is one instruction. तो वन इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट करने के लिए कितना साइकिल चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? जस्ट टेक्निकल वर्ड्स. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड. सीपीआई बोलो तो साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन. साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन. दैट्स व्हाट द नंबर ऑफ मशीन साइकिल्स. दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर. सो हियर द साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन 13 T states. Got it? So this is what we call as CPI. Cycles per instruction. 13 T states. And previously this is what we call this is 13 T states. This is also cycles per instruction. Cycles per instruction. See the my dear, here also cycles per instruction is same, and the other processor also cycles per instruction is same. But if you see the MIPS, millions of instructions per second is different because the speed of the processing may be different. Next, execution time for one instruction is CPI into one cycle time. See CPI बोलो तो क्या है? CPI बोलो तो cycles per instruction. ये cycles per instruction है. One cycle time multiply करो तो क्या होगा? Execution time for one instruction. But the CPU may be executing n instructions. When CPU is executing n instructions, what is the formula? Please make a note. Cycles per instruction into one cycle time. Cycles per instruction. Suppose I am having 13 T states. 13 cycle चाहिए एक instruction के लिए. So cycles कितना है? 13. One cycle का time कितना है? 1 by 0.2. For example, I am having, for example, let us take a 8086 microprocessor is there. I am having suppose 20 instructions. How many? 20 instructions I want to execute. What is the CPI? Please tell me. For 8086, what is the CPI? Please tell me. Please tell me. For CPI कितना है? Cycles per instruction. Cycles per instruction, of course, that differs. Do you understand? ये cycles per instruction constant होता है? नहीं. Cycles per instruction अलग अलग होता है. Average लेना है. Suppose a CPI average कैसा लेते हैं? Number of instructions को मिला के CPI को लेना है. For example, average if I am taking 13 T states, कितना है? Cycles per instruction 13 T states. And one cycle time is how much?
one cycle time, please tell me, one cycle time is how much? One cycle time is how much, my dear? That is 0.2 microseconds. 0.2 microseconds. 0.2 microseconds. So I have 20 instructions. So for instructions कितना होगा execution time? Time of execution कितना होगा? I have 20 instructions. One instruction takes 13 T-states. One instruction takes how many T-states? 13 T-states. And one cycle time is how much? 0.2 micro. How much, dear? Understood? So this is the way you have to calculate the total time. Is it clear, my dear? All of you following? Yes. Chalo. Now here CPU performance is given by MIPS. That's what I told you, millions of instructions per second. Of course, millions of instructions per second का formula है number of instructions by total execution time. Please make a note of this point. Number of instructions executed in 1 second is this. MIPS बोलो तो by 10 power 6. Okay, millions of instructions per second. Just a formula based, but लेकिन ये formula बिना formula भी आप कर सकते हो. आपको प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है. अगर एक बार प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करें तो आप आराम से कर सकते हैं. चलो माय डियर, so here I have certain table. I think this table is visible to you. See here, please try to understand. Consider example problem. Consider a computing system that overall CPI for a machine A for which the following performance measures were recorded when executing a set of benchmark program. There is a standard program, my dear. The standard program, there is a test program. There is a test program. The test program contains some set of instructions. Arithmetic instructions are there. Data transfer instructions are there. Control transfer instructions are there. IO port instructions are there. Okay. Assume that the clock rate of the CPU is 200 megahertz. So what is this given? What is given, my dear? What is the 200 megahertz? Can anybody tell me? So that is a clock rate. Frequency of the CPU is given, my dear. So frequency of the CPU is given as how much? 200 megahertz. And the number of instructions are how many? The total number of instructions. Total instructions how many? Total instructions is 200 total instructions, my dear. Total instructions are how many, my dear? Total instructions are 200. Now in the question he has, what he has given. Please, first don't see this, just see this. Percentage of occurrence. Out of the 50% of arithmetic instructions are there. Out of the 200 instructions, total 200 instructions, my dear. So let me take one yeah. So what is given? Percentage of occurrence is 50%. So 200 low arithmetic instructions. Arithmetic instructions how many? Arithmetic instructions are 50%. 50% of how much? Total. Total number of instructions is 200. That is how much? 50 by 100 into 200. So that is going to become how many number of instructions? 100. So number of instructions related to arithmetic how many? 100. Next, data transfer is how much percentage? 25%. Data transfer instruction. Do you understand? All of you understanding? I have a program. In that program, total number of instructions are 200. In this 200 instructions, some are data transfer, some are arithmetic, some are IO, some are branch control instructions, like that. Their percentage is given. Data transfer is how much? 25%. So question what is given? Data transfer instructions are how much? 25%. 25% of 200 कितना होगा बेटा? 25 by 100 into 200. 100 2 जा, so that is going to become 50. 50, right? Next, so 50 आ गया. Next, control transfer instructions कितना है? 15%. Control transfer means branch. Control transfer means branch instructions.
ये कितना है 15%, 15% ऑफ 200 कितना होगा 15% ऑफ 200 बोलो तो 15 by 100 into 200 and 2 so that become 30, right? So there become 30 instructions. Next कितना IO instructions are 10%. IO instructions are how many? IO instructions are how many? 10%. 10% of 200 my dear, that means 10 by 100 into 200, so that is going to become 20. So total मिला के कितना हो गया? टोटल काउंट कितना आ रहा है जल्दी बताइए, टोटल काउंट कितना आ रहा है? 100 plus 50 150 plus 30 180, so total count आ रहा है 200 instructions आ रहा है, that's it. बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं हमको? क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? Consider computing the overall CPI for a machine A. So we have to calculate the overall CPI, cycles per instruction we have to calculate. Okay. So now if you see, what is the data given? Cycles also given beta. See the data. Cycles, 100 cycles. Why 100 cycles? Number of cycles per instruction is given. Number of cycles per instruction is given. That means if you want to perform one arithmetic instruction, how many cycles per instruction? 1 cycle चाहिए. Arithmetic instructions के लिए एक instruction के लिए एक cycle चाहिए. So कितना है? So 50 into 1. So total. Sorry. Number of instructions is 100, right? Number of instruction is 100. So एक instruction के लिए 1 cycle चाहिए. So total cycle will be 100 cycles. Next. Try to understand my dear. I want to find out what is the cycles per instruction average. मुझे क्या चाहिए बेटा? मुझे CPI average चाहिए. So how to calculate that? तो मुझे क्या चाहिए? मुझे cycles per instruction average चाहिए. That is a question my dear. How to calculate this? मेरा क्वेश्चन ये है कि CPI चाहिए, CPI average चाहिए. All of your understanding देबाशिष साहू. How to do this question? पूरा 200 इंस्ट्रक्शंस है, 200 इंस्ट्रक्शंस में परसेंटेज दिया है. सो आई नीड CPI, cycles per instruction average. What is the average cycles per each instruction? That is what I want. Can you solve? कैसे सॉल्व करना है बेटा? See, how many arithmetic instructions are there? How many arithmetic instructions are? 100. वन अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के लिए कितना साइकिल चाहिए? 1 साइकिल चाहिए. सो टोटल हाउ मेनी साइकिल चाहिए? 100 साइकिल चाहिए. सो साइकिल्स, इंस्ट्रक्शन साइकिल फॉर अरिथमेटिक. ओके, इंस्ट्रक्शन साइकिल फॉर अरिथमेटिक. ओके, आई विल डू वन थिंग. जस्ट वेट माय डियर. See here, we got the percentage, we got the number of instructions. Okay, you try to understand. There is a program, the program contains a set of instructions and वो program में वो instructions का percentage दिया है. Okay ना, percentage दिया है. हमारे पास total number of instructions आ गया. Total number of instructions is 200. So what I want to write finally, total number of arithmetic instructions. Total number of arithmetic instructions कितना हो गया? Yes, from this column we got 100. चलो next. One instruction के लिए कितना है? Instruction cycles. One instruction, one number of cycles per instruction क्या है? See, one instruction per cycle, one CPI, one cycle per interrupt, one cycle per instruction, one CPI, one cycle per instruction. मेरे पास 100 साइकिल्स है. सो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स कितना होगा? बताइए बेटा. नंबर ऑफ साइकिल्स पर अरिथमेटिक कितना होगा?
वन साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, ऐसा 100 साइकिल्स है, सो 100 इंस्ट्रक्शंस है, तो 100 साइकिल्स होगा। गॉट इट, 100 साइकिल्स होगा। नेक्स्ट डाटा ट्रांसफर कितना है, टोटल नंबर ऑफ डाटा ट्रांसफर, टोटल नंबर ऑफ डाटा ट्रांसफर कितना है, टोटल नंबर ऑफ डाटा ट्रांसफर 50 है, 50 है। So what is the CPI? The CPI is given as number of cycles per instruction. That's what you have to understand the words. Pragati ji, Sahu ji, what I am talking now. In the exam आपको confuse करने के लिए आपको words देते हैं, words को understand करना है। What is this? Number of cycles per instruction. That means cycles per instruction. CPI is given ना, cycles per instruction is given. कितना है? 3. So this is a 3 CPI. 3 CPI means what is the total पर डाटा ट्रांसफर कितना होगा, 150 होगा। गॉट इट? नेक्स्ट कंट्रोल ट्रांसफर कितना है, कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस आर 30। कंट्रोल ट्रांसफर, टोटल नंबर ऑफ कंट्रोल ट्रांसफर कितना हो गया, 30। कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का सीपीआई कितना है, साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन, साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन इज गिवन एज 4 CPI। अभी कितना होगा टोटल, 4 साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन। ऐसा इंस्ट्रक्शन कितना है, कंट्रोल 30 इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन के लिए मुझे 4 साइकिल चाहिए, 30 इंस्ट्रक्शन के लिए कितना साइकिल चाहिए, 120 साइकिल्स चाहिए। डन। नेक्स्ट, उसके बाद आईओ पोर्ट इंस्ट्रक्शंस हाउ मेनी, 20 है। आईओ पोर्ट इंस्ट्रक्शंस कितना है, टोटल नंबर ऑफ आईओ पोर्ट इंस्ट्रक्शंस, आईओ पोर्ट इंस्ट्रक्शंस है 20 है। सो इसका सीपीआई कितना है बेटा, पोर्ट इंस्ट्रक्शन का सीपीआई कितना है, पोर्ट इंस्ट्रक्शन का सीपीआई है 5 है, 5 सीपीआई। तो 5 इज द सीपीआई, అంటే फॉर 1 इंस्ट्रक्शन 5 साइकिल्स, तो फॉर आईओ पोर्ट कितना आ रहा है, 20, 100 आ रहा है। नाउ टेल मी द टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितना आ गया, फटाफट टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस माय डियर, 100 प्लस 50 150 प्लस 30 180 प्लस 20 200 आ गया। ओके, टोटल साइकिल्स, टोटल साइकिल्स कितना आ गया, काउंट करो कितना आ गया बेटा, कैलकुलेट करो कितना आ गया। दिस इज 0, 5 प्लस 2 7 1 1 1 1 470। So what is the CPI average? Can you tell me? साइकिल पर इंस्ट्रक्शन एवरेज बोल सकते हैं अभी? यस, देवाशीष साहू अभी बता सकते हैं आपको सीपीआई एवरेज कितना होगा, सीपीआई एवरेज कितना होगा। मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में एवरेज साइकिल्स पर, ओवरऑल सीपीआई नहीं, दिस एवरेज सीपीआई। क्वेश्चन में क्या पूछा, एवरेज सीपीआई चाहिए। वी हैव टू कंसीडर द एवरेज सीपीआई। एवरेज सीपीआई कितना होगा, टोटल साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। am I right or not my dear? So that will be how much, 470 by 200. So if we simplify, how much we are going to get, 2 ja 2 2 3 ja 235, 2.3, मजा आ गया। yes, 2.35 is the very simple my dear, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा आएगा। सो इसको हम बोलते हैं सीपीआई एवरेज, साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन एवरेज कितना है, 2. मजा आ गया। Can you solve such type of questions if you get in the exam? I hope you can solve such type of questions in the exam. Very simple questions, but the only thing question को आप understand करना है, the terminology को understand करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, CPU को क्लॉक रहता है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, हमारा EC लैंग्वेज में सिंपल टर्म्स में यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी का इन्वर्शन करें तो टी स्टेट आएगा, लेकिन टी स्टेट, ग्रुप ऑफ टी स्टेट्स को हम मशीन साइकिल बोलते हैं, एक ग्रुप ऑफ मशीन साइकिल्स को इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं। एक इंस्ट्रक्शन के लिए नंबर ऑफ साइकिल्स चाहिए, केवल एक साइकिल नहीं हो सकता है। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ साइकिल्स चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। सी, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के लिए 1 साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, एंड डाटा ट्रांसफर के लिए 3 साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन, दैट डिपेंड्स type of instructions. A processor can support, one processor can support certain type of instructions. For example, if you take 8085 microprocessor, 8085 processor can support addition, subtraction, but 8085 cannot support multiplication, division. Am I right or not, dear? 8085 can support addition, subtraction, but it cannot support multiplication, division. So अगर आपने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करना चाहते हो बाय यूजिंग द 8085 प्रोसेसर, बाय यूजिंग 8085 प्रोसेसर, अगर आपने मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट करना चाहते हो, कैसा पॉसिबिलिटी है? हमारे पास मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन नहीं है, सेम ऐड इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल टाइम्स यूज करना है। सपोज इफ आई वांट 5 into 4, व्हाट आई हैव टू डू? 5 + 5 + 5 + 5, लाइक दैट आई हैव टू डू। सो देन क्या होता है, एक मल्टीप्लाइंग इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट करने के लिए हमको कितना एडिशंस करना है? 4 एडिशंस करना है। So, but if you go to the 8086, in 8086 आपके पास डायरेक्टली मल इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, मल इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, उसके लिए 2 साइकिल्स हो सकता है। That why the CPI average varies. The CPI average varies. Do you understand, my dear? Processor to processor, MIPS varies or not? अभी बताइए, which is the efficient processor, which is having more CPI average, which is having less CPI average, which is the more efficient processor? A processor which is having more CPI, more average CPI or less average CPI, my dear? Please tell me what is the answer. Which is the most efficient processor? A processor which is having less average CPI or more average CPI? नो आंसर। बेटा, प्रोसेसर का परफॉर्मेंस के लिए, ए प्रोसेसर परफॉर्मेंस can be judged only on MIPS. Is it true or false? बताइए बेटा। प्रोसेसर परफॉर्मेंस कैन बी जड्ज्ड ओनली ऑन MIPS. इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉर एग्जाम्पल, मेरा पास एक P1 है, प्रोसेसर P1, अनदर एक प्रोसेसर 2 है। वन प्रोसेसर इज गिविंग मी 10 MIPS and second processor is giving the 20 MIPS. So now can you judge, as it is executing 20 million instructions, MIPS बोलो तो क्या है बेटा? Million instructions per second. As this P2 is executing 20 million instructions per second, can I say, based upon this particular metric only, can I say P2 is efficient? That's my question. Yes, Pragati ji, correct. मुझे एक 2 प्रोसेसर है मार्केट में, एक प्रोसेसर का 10 MIPS है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड 10 है, और एक प्रोसेसर का 20 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड है बेटा। केवल ए मेट्रिक पर, ए परफॉर्मेंस, ए पर्टिकुलर डाटा मेट्रिक पर हमने प्रोसेसर का परफॉर्मेंस को जज कर सकते? दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन। नो, व्हाई? बिकॉज दिस 10 MIPS में भी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस, okay, this 20, this may be complex instructions, my dear, and this may be simple instructions.
सो परफॉर्मेंस के लिए केवल ये MIPS डाटा सफिशिएंट नहीं है. 10 MIPS and this is simple instructions. So what is the best metric? What is the best metric? Suppose if I take the CPI, average CPI. See, average CPI, suppose this is taking 5 microseconds. 5 microseconds is the cycles per instruction average. Cycles per instruction average, and it is taking, sorry, not microseconds. This is, suppose if I am taking average cycles per instruction. This is, suppose let us take some 15, and it is taking suppose 10, or it is taking some 30. Average CPI for this particular processor is 30, average CPI for this particular processor is 15. Now बताइए क्या होगा? Here cycles per instructions average, one instruction को कितना execute है? 30 cycles है, and one instruction को average कितना है? 15 cycles. You understand? It depends upon the instruction classification, it depends upon the instruction quality. That instruction may be a CISC category, that instruction may be a RISC category. You understand my dear? मैंने बताया आपको, अगर CISC instruction है तो क्या होगा? एक ही instruction होगा, एक ही instruction under that any number of micro operations होगा. लेकिन RISC ऐसा नहीं है. RISC is having many instruction, एक ही ऑपरेशन 3 ऑपरेशंस मिला के हो सकता है. लेकिन CISC में क्या होगा? CISC is a complex instruction, one single instruction, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अंडर द one single instruction there will be many number of micro operations. Got it my dear? That's why प्रोसेसर का परफॉर्मेंस मेट्रिक के लिए केवल MIPS नहीं हो सकता, केवल CPI भी नहीं हो सकता, उसके लिए lot of parameters we have to consider. First consideration is what is the frequency of the processor. Second consideration is what is the CPI average. Third consideration is MIPS, and the most important consideration is what is the type of instruction that processor can support. Please make a note of this point my dear. What are the points? Please note down. Performance metrics. First most important is the frequency. Actually this should be first. Okay, this should be first. This should be please make a note of these points my dear. Expected MSQ question. CO is a conceptual subject beta. Computer organization is a conceptual subject. Please make a note of these points clearly. ये फार्मूलास रिमेंबर करने के लिए जरूरत नहीं है. फार्मूलास टेक्स्ट बुक से मैं कलेक्ट किया हूं, एक स्टैंडर्ड्स टेक्स्ट बुक विलियम्स स्टैलिंग्स टेक्स्ट बुक से मैं लिया हूं, लेकिन ये फार्मूलास को याद रखने की भी जरूरत नहीं है. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रन टाइम आप कर सकते हैं. अंडरस्टूड माय डियर?
चलो, so based upon this understanding, now I am giving a question to you. Yeah, try to answer. This was a GATE CSC question. Actually EC का नहीं है, GATE CSC का question है, model question है. So try to answer this question. Try to understand this question. GATE computer science का question है ये. Okay, there are two processes my dear. ध्यान से देखो, there are two processors, processor 1 and processor 2, P1 and P2. Consider two processors P1 and P2 executing the same instruction set. So there is no distinguish risk ऐसा कुछ नहीं है, दोनों प्रोसेसर सेम कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. नेक्स्ट, assume that under identical conditions for the same input means same program or same instructions you are giving, a program running on P2 takes 25% less time but incurs 20% more CPI. Okay, so time of P2 is 25% less of time of P1, that is first one, and incurs 20% more CPI. Which one? Running on P2. Okay, so CPI of P2 कितना है? 20% more CPI. You understand? 20% more than CPI of P1. Arithmetic. Understood? So as compared to the program running on the P1. So P1 से compare करें तो this is P1 my dear, this is P2. Okay, P1 से compare करें तो P2 is taking 25% less time, but it is taking 20% more CPI. So it is taking 25% less time and this is taking 20% more CPI, P2. Okay, so if the clock frequency of the processor 1 is 1 gigahertz, then the clock frequency of the P2 is dash. Try to answer my dear. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, try to understand and do it. I am waiting for your answer. Anybody? इस a processor है, a processor is having certain frequency. फर्स्ट प्रोसेसर का फ्रीक्वेंसी दिया है, सो उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं. टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f. ओके ना, राइट. एक इंस्ट्रक्शन के लिए नंबर ऑफ टी स्टेट्स कितना होगा? एक इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट करने के लिए कितना टाइम होगा? एक इंस्ट्रक्शन के लिए सीपीआई कितना होगा? सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स क्लियरली. एक प्रोसेसर को एक फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी आपको एक टी स्टेट मिलता है, 1 टी स्टेट. ऐसा टी स्टेट्स कितना चाहिए, ऐसा साइकिल्स कितना चाहिए, 10 हमको बोलते हैं सीपीआई बोलते हैं. तो एक एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन पूरा एक्सिक्यूट करने के लिए, इंस्ट्रक्शन पूरा एक्सिक्यूट करने के लिए क्या है फॉर्मूला? प्लीज टेल मी माय डियर, उसको कैसे सॉल्व करना है? वन इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट करने के लिए कितना टाइम होगा? हाउ टू डू दिस प्रॉब्लम? सी हियर, सी there is a frequency my dear, frequency inverse will get time t state my dear, and like this one cycle होगा, one cycle होगा, one cycle CPI, number of cycles. How many number of cycles? N of t states will become one machine cycle. You understand my dear? So एक particular CPI, cycles per interrupt, cycles per instruction, like this there may be n number of cycles per instruction na. Do you understand? So instruction execution time of instruction execution कैसा निकालना है? First try to understand, to derive something from the given data.
क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी से हम टाइम निकाल सकते हैं, एंड 1 CPI दिया है, साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन. Okay, like that, how many cycles are there? N cycles are there. Okay na? So what is the execution time of an instruction? That is my question. Execution time of execution time for an instruction. What is the formula? Please tell me. What is the time of execution for instruction? That I want, my dear. I am expecting the answer from you. एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम होता है, उसको लेके फॉर्मूला कैसा निकाल सकते हैं. मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी है बेटा, फ्रीक्वेंसी को इन्वर्शन करो, मुझे टाइम मिलेगा. सो 1 TState मिलेगा. ओके ना. एंड व्हाट इज द CPI? साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन. ऐसा n नंबर ऑफ TStates हो तो क्या होगा, n साइकिल्स होगा. Yes or not? And एक साइकिल के लिए कितना टाइम लगेगा, T लगेगा. So can I take this is the instruction execution time? Do you understand my dear? So एक इंस्ट्रक्शन के लिए साइकिल्स, एक इंस्ट्रक्शन के लिए कितना साइकिल्स हैं, like that how many number of instructions हैं, how many number of cycles हैं, एक साइकिल के लिए कितना टाइम है. See, try to understand my dear. So this is what our TState. चलो, this is what our TState. This is our TState. T1. This is T2. This is T3. Suppose let us assume one instruction takes cycles per interrupt. Cycles per instruction. Let us take 4 cycles लेते हैं. One instruction takes 4 cycles per instruction. 4 cycles per instruction. Okay na? One instruction takes 4 cycles. Now tell me, what is the time of execution of this? One instruction takes 4 cycles beta. So how to take the instruction cycle time? So time taken for the instruction. क्या होगा बताइए जल्दी. 4 CPI. For example, cycles per instruction. 4 cycles है. That's it. 4 cycles. Clear? 4 cycles हो गया. Clear? All of you got it? 4 cycles per instruction. Clear? And 4 cycles per instructions को what we have to multiply? The time we have to multiply. Yes or not? So what is the time? What is the time, my dear? What is the time? That is nothing but TState. 4 TStates. And what is this T? T is nothing but 1 by F na. So in this way, try to solve this problem. I'm expecting answer from you, my dear. Please try to answer. Chalo, let us take like this. Chalo, let us take like this. This is processor 1. This is processor 2. Okay. Next, first one. Let us take the number of instructions. Next, let us take the number of instructions required. What is the other data he has given? A program running on P2 takes 25% less time. What is the 25% less time? What we can take execution time? Let us take this the X% less time. What we can take execution time? Let us take this the execution time. One more, this is the execution time column. Okay, next. What is the other data he has given? CPI is given na. So this is the CPI. Okay, CPI is given.
Next, tell me what the other information is given. Frequency is given. Frequency, yes. So now tell me frequency of processor 1. Frequency of processor 1 is given as 1 gigahertz. Yes, this is 1 gigahertz. Frequency of processor 2 we don't know. We have to calculate that. Yes or not? Next tell me what the next data he has given here. CPI कितना है? CPI is P2 is 20% more of CPI. 20% more of CPI. For example, CPI of processor 1, let us take C1. CPI of processor 1, that means cycles per instruction in processor 1, if you take C1, P2 कितना है? 20% more of C1, that means C2 कितना होगा? C2 कितना होगा? Please tell me. C2 will be 20% more. 20% more of C1 कितना होगा? So if you take CPI of processor 1 as C1, C2 कितना होगा बेटा? 20% more of C1. That means C1 plus 20% of C1. Yes or not? कितना आएगा ये? 20% more of C1 बोलो तो कितना होगा बेटा? C1 plus 20% more of C1. That means 0.2. That means it is going to become 1.2 C1 na. Simple arithmetic, my dear. It is going to become 1.2 C1 or not? The CPI of processor 2 is 20% more of processor 1. Processor 1 का CPI I have taken as C1. So C1 से 20% ज्यादा है. कितना arithmetic हो गया? C1 plus 20%. That becomes 1.2 C1. So C2 will be how much, my dear? C2 is 1.2 times of C1. मजा आ गया? Clarity आ गया? चलो next. Similarly, execution time. Let us take this as T1. Let us take this as T2. Okay. Execution time क्या दिया है? 25% lesser time. 25% lesser time बोलो तो कितना होगा? If you take this as T1, T2 will be 25% lesser than T1, means it will become 0.75 T1 na. All for understanding, my dear. 25% lesser means it is going to become how much? 75%. अगर आप 100 seconds में execute करें तो मैंने 75 seconds में execute करूंगा, क्योंकि मेरा प्रोसेसर स्पीड 25% लेसर देन यू. अगर आप 100 seconds में execute करें तो मैंने 75 seconds में execute करूंगा. That's what the information given. Yes or no, my dear? Please answer कर दीजिए. Yes, perfect. Next, number of instructions कितना है? N1, N2. But here is one data for us. What is the data given for the same input and the same instruction set? Do you understand? Consider two processor P1 and P2 executing the same instruction set. That means the data given here is N1 is equal to N2 is given, my dear. So first of all, execution time को निकालो. Execution time को निकालो. Execution time का formula क्या है? Execution time का formula क्या होगा, my dear? Execution time का formula क्या होगा? Execution का time का formula, एक instruction execute करने के लिए one instruction, for one instruction execution time का formula क्या है? Please tell me. One instruction can have average cycle. So this is CPI. Okay na? This is the CPI. Cycles per instruction. Okay? ये cycles per instructions को हमने कितना, what we have to multiply? We have to multiply with the T states. Yes or not? One T state. Cycles per instruction. Suppose I have 4 cycles and each cycle is taking T states. This is for one instruction. So for n instructions execution कितना होगा? For n instruction execution time कितना होगा? N into CPI into T होगा ना? You understand? एक instruction is having n number of cycles. एक cycle is cycles per instruction. Suppose 13 cycles are there. एक cycle के लिए कितना time होगा? C into T, CPI into T, my dear. Got it? All of you understood? So n instruction का formula आ गया हमको. चलो कितना हो गया? n instruction के लिए execution time कितना हो गया? तो execution time
execution time for n interrupts, n instructions will be n into CPI into time. That's it. Now you can calculate. Now you can calculate, my dear. We need what? Number of instructions. Okay, please calculate. N1 is equal to N2. Number of instruction क्या होगा? N will be equal to execution time divided by CPI into time. So N1 is equal to N2. So this execution time means T. T by CPI into this is the time period. Okay, T by CPI into T1. So please tell me what happens now. T1 by CPI 1 into T1 is equal to T2 divided by CPI 2 into T2 हो गया. Is it clear, my dear? Now you can calculate. हमको 1 by T1 means this is T1 by CPI 1. This is frequency 1. And this is T2 by CPI 2 into frequency 2. And हमको T2 का CPI 2 का information available है. T2 is 0.75 T1. So this is 0.75 T1. CPI 2 कितना है बेटा? CPI 2 1.2 C1. This is 1.2 C1 into F2 है. That's it. And T1 as it is लगाओ. F1 as it is लगाओ. CPI 1 C1 लगाओ. So C1 C1 gets cancelled. T1 T1 gets cancelled. So आपको F2 आएगा. F2 is equal to 1.2 by 0.75 into F1 आएगा. Am I right or not, my dear? All of you got this answer? मजा आ गया? So what is F1, my dear? F1 is 1.2 by 0.75 frequency. This is 1 gigahertz na? F1. F1 is 1 gigahertz. Please tell me the answer. Answer बताइए जल्दी. Please tell me the answer. कितना आ रहा है? F2 कितना आ रहा है? The total execution time you have to understand, my dear. One instruction execution time is equal to time taken for group of machine cycles. Okay na? For example, one machine cycle, that is 1 CPI. Number of cycles per instruction, if you know, one instruction number of cycles, if you know, multiply with T, you will get. One instruction may require more cycles. एक cycle के लिए more T states. So one instruction के लिए time कितना होगा? CPI multiply with T. N instructions के लिए कितना होगा? N into CPI into T. Please remember this formula. Point 625 gigahertz. चेक करके बताइए बेटा. 1.2 by 0.75 into 1. That means 1.2 by 0.75. कितना आ रहा है? 0.625. Okay. 0.625 giga. Got it? All of you got it? Understood? No need to be by heart, my dear. Just you have to divide. एक इंस्ट्रक्शन के अंदर मेनी साइकिल्स होता है. अगर एक इंस्ट्रक्शंस के लिए कितना साइकिल्स होता है अगर पता हो तो उसको मल्टीप्लाई विथ टी, यू विल गेट द टाइम फॉर वन इंस्ट्रक्शन. मैं बार बार बोल रहा हूं. कितना आ रहा है? 1.6. कैलकुलेशन करेक्ट करो. 1.2 by 0.75 माय डियर. 1.2 by 0.75. 1.6 आ रहा है ना? That's it. All of you enjoyed? That's it, my dear. So try to follow
those students who are new to this session, please try to follow the previous lectures also. Addressing modes 1, addressing modes 2. थोड़ा सा ECE का माइक्रो प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट लगाओ बस. अगर आपको ये टी स्टेट का डायग्राम क्लैरिटी है, अगर आपको ये डायग्राम क्लैरिटी है बेटा, ऑटोमेटिकली एनी क्वेश्चन यू कैन आंसर. अगर आपको ये पर्टिकुलर डायग्राम, दिस पर्टिकुलर डायग्राम माय डियर, दिस पर्टिकुलर डायग्राम्स आर क्लियर, देन आप एनी क्वेश्चन आपको आंसर कर सकते. प्लीज यूज सम ECE का नॉलेज, ECE का नॉलेज, बेसिक कम्युनिकेशन, बेसिक क्लॉक सिग्नल. अगर आप ECE बच्चे हैं तो आपको इजी है. टी स्टेट क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, मशीन साइकिल क्या है, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है. देखो, वन इंस्ट्रक्शन साइकिल इज इक्वल टू n नंबर ऑफ मशीन साइकिल्स. नंबर ऑफ मशीन साइकिल्स के लिए कितना टाइम लगेगा, CPI होगा, साइकिल्स पर इंटरप्ट. तो अगर मुझे 10 मशीन साइकिल चाहिए, दैट इज कॉल्ड 10 साइकिल्स. 10 साइकिल्स, पूरा टाइम कितना होगा, एक साइकिल के लिए 1 टी स्टेट, 10 साइकिल्स के लिए 10 × टी स्टेट्स. अगर मेरा प्रोग्राम में 4 इंस्ट्रक्शंस है तो 4 × 10 × टी, दैट्स इट, ओवर. कितना सिंपल अर्थमेटिक है ना प्रगति जी, वेरी वेरी सिंपल अर्थमेटिक. ज्यादा टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ना, ज्यादा फॉर्मूलास नहीं रिमेंबर करना, ज्यादा हेड को हेडवेट, डोंट इंक्रीज योर बर्डन ऑन योर हेड. बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस स्कीमेटिक इफ यू अंडरस्टैंड. एक इंस्ट्रक्शन के अंदर मशीन साइकिल्स होता है, ओके ना. एक मशीन साइकिल के अंदर नंबर ऑफ टी स्टेट्स होता है. अगर आपको साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन पता हो, दैट मल्टीप्लाई विद टी करो, 1 इंस्ट्रक्शन साइकिल का एग्जीक्यूशन टाइम मिलेगा. अगर प्रोग्राम में n नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है तो n into that. Very very simple arithmetic. No need to remember any formula, no need to follow any textbook, no need to follow any Google. Just a simple basic microprocessor का simple arithmetic. चलो माय डियर, नेक्स्ट क्लास में हमने थोड़ा सा कंट्रोल यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे. कंट्रोल यूनिट के बाद हम पाइपलाइनिंग स्टार्ट करेंगे. ओके माय डियर, don't be tensed. COA बोलो तो very tough subject. COA is conceptually very easy subject. The only thing is we are going into the depth of the processor, we are going to the depth of the architecture. सेशन को लाइक कर दो बेटा. बहुत सारा बच्चों को पता नहीं है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं ये ECE का सब्जेक्ट है. बहुत सारा ECE बच्चों को ये पता होना है ECE का COA है. एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर रिलेटेड टू ECE है. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन में लास्ट 2 लाइन है. आई एम एक्सपेक्टिंग 1 or 2 मार्क्स बेटा, क्योंकि अब तक कोई मार्क्स नहीं आया. लास्ट ईयर 0 मार्क्स, आई थिंक प्रगति, आई थिंक यू कैन फाइंड लास्ट ईयर 0 मार्क्स. 2022 में कुछ मार्क्स नहीं आया, 21 में भी मैंने कुछ नहीं देखा, मार्क्स को नहीं देखा, लेकिन हो सकता है टाइम. ओके, so please share your valuable comments, valuable feedback in the commentary box after the session is over. अगर DPP थोड़ा डिले है तो थोड़ा वेट कर लो, DPP आएगा. आई थिंक ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड DPP 1, 2, 3, 4. आज का DPP आज ही आएगा. थोड़ा डिले हो गया, थोड़ा मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा DPP लेट हो गया. आज 10 बजे तक आपको DPP मिलेगा. DPP भी प्रैक्टिस कर लो एंड नेक्स्ट सेशन को विद प्रैक्टिस आ जाओ. चलो माय डियर, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट.